डायरेक्टर शर्मा जी को विनती करूंगी कि वो मंच पे आ जाएं और मंच पे विराजमान मेहमानों का गमछा पहना के उनका स्वागत करें। सबसे पहले प्रोफेसर रविंद्र सिंह जी का। सर लुक एट कैमरा, वेट करेंगे सर, वेट। प्रोफेसर हरे कृष्ण सतपथी जी का स्वागत करेंगे। यस सर, लुक एट, वेट ऐसी नहीं सर। और श्री बसवराज कलकुड़ी जी का स्वागत करें। यस कैमरा फेस, वेट ऐसी नहीं, वेट। बहुत बहुत शुक्रिया सर। इस प्रोग्राम में हम भारत की बौद्धिक परंपरा के बारे में चर्चा करेंगे। हम जानते हैं कि हमारी बौद्धिक परंपरा कितनी अमीर है। दुनिया का सबसे पहला ग्रंथ ऋग्वेद से लेकर आज तक ये परंपरा ने लगातार विकास किया है। इसमें वैदिक ज्ञान, वेद, वेदांत, बुद्ध और जैन धर्म के ग्रंथ, भक्ति काल की रचनाएं, भगवत गीता और दूसरे विज्ञान से जुड़ा बहुत सारा ज्ञान। यही वजह है कि हमारे स्कॉलर भी अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए इन बौद्धिक परंपराओं का मार्गदर्शन लेते हैं। हम इस प्रोग्राम की शुरुआत डॉक्टर रविंद्र सिंह जी से कर रहे हैं, जो हमें पंजाब के विशेष संदर्भ में भारतीय बौद्धिक परंपरा से जोड़ेंगे। प्रोफेसर रविंद्र सिंह जी। पंजाबी के जाने माने राइटर और स्कॉलर रविंद्र सिंह जी दिल्ली यूनिवर्सिटी के पंजाबी डिपार्टमेंट से रिटायर्ड प्रोफेसर और हेड और दिल्ली सरकार की पंजाबी अकेडमी के 14 साल सेक्रेटरी रहे। उन्होंने अब तक 12 किताबें पब्लिश की और 48 किताबें एडिट की और 10 किताबों का ट्रांसलेशन किया। उनके रिसर्च पेपर मशहूर मैगजीन और जर्नल्स में पब्लिश होते रहते हैं। इसके अलावा उनकी कुछ किताबें अलग अलग यूनिवर्सिटियों के करिकुलम में शामिल हैं। उन्हें कई इंटरनेशनल और नेशनल अवार्ड मिल चुके हैं। अभी वह वर्ल्ड पंजाबी ऑर्गेनाइजेशन और इंटरनेशनल सेंटर फॉर सिक्स स्टडीज़ के सेक्रेटरी जनरल है। वह साहित्य अकेडमी के पंजाबी एडवाइजरी बोर्ड के कन्वीनर हैं। अभी मैं उनको मंच पे आमंत्रित कर रही हूँ कि वो अपनी बात रखें। माननीय सतपथी जी, कलकुड़ी जी, डॉक्टर संदीप कौर, मेरे मित्र मैडम बनीता, चरणजीत जी और दोस्तों, श्रोते बहुत कम है, इसलिए कम समय में बोल के बात खत्म कर देनी चाहिए। मेरे को कहा गया कि पंजाब के संदर्भ में इंडियन नॉलेज ट्रेडिशन या इंडियन बौद्धिक ट्रेडिशन के बारे में बात कर रहे हैं। तो जब मैं सोच रहा था कि मैं क्या बोलूँगा, तो मेरे लिए ये था कि जब हम इंडियन नॉलेज ट्रेडिशन की बात करते हैं तो हम वैदिक काल से शुरू कर लेते हैं, वेदों से शुरू कर लेते हैं। तो नेचुरल है कि आर्यन के आने के बाद जो वेद जो लिखे गए या वेद उच्चारे गए उसके बारे में हम बात शुरू करते हैं। पर जब पंजाब के संदर्भ की बात आती है तो फिर बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है कि पंजाब में जो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की जो सभ्यताएं हैं या सप्त सिंधु की सभ्यता है, उसको आप देखें तो वो कुछ से प्री काल की सभ्यताएं हैं। और उसमें जो आपको देखने को मिलेगा, जो अविशेष मिले हैं मोहनजोदड़ो में और हड़प्पा में, उन अवशेषों से आप पंजाब में जो इस खित्ते में, जो पंजाब था वैसा पंजाब नहीं था, वो बहुत वास्ट एरिया का था पंजाब, और उसमें जो
अवशेष मिले, उसमें आपको जो कुछ मिला है उसमें आपको भवन निर्माण का ज्ञान बहुत है, आर्किटेक्ट का, और बहुत बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिली हैं जो बाद में बहुत देर बाद डेवलप हुई है। तो आप आर्यन से आने से पहले की जो बात करते हैं, तो हम आर्यन से आने से पहले मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से पंजाब की नॉलेज ट्रेडिशन को या हिंदुस्तान की नॉलेज ट्रेडिशन को देखते हैं। वैसे भी कहते हैं कि आर्यन लोग जो थे वो ट्राइब्स की तरह घूमते फिरते थे, और जब वो घूमते घूमते पता नहीं कितने सालों तक, कितने हजारों साल, सैकड़े साल वो घूमे होंगे, जब वो इस धरती पर आए तो उनको जहाँ कई जो धरती है, जहाँ की जो ज़मीन है वो बहुत फर्टाइल मिली और यहाँ आके वो रुक गए। और जो हमारे यहाँ बहुत सारे लोग कहते हैं कि आर्यन बाहर से नहीं आए, जहाँ आर्यन यहाँ के रहने वाले थे, उससे मैं कम से कम पर्सनली सहमत नहीं हूँ, क्योंकि आर्यन की जो परंपरा है जो हम ईरान में देखते हैं या रशिया में देखते हैं, तो वो परंपरा वहाँ से लगता है कि वो रशिया की तरफ से, मध्य एशिया की तरफ से इस तरफ बढ़े। और आप देख सकते हैं कि जब वो यहाँ आए तो ईरान से लेकर भारत तक, लगभग ये पंजाब तक एक ही भूमि थी जिसमें देशों की वंड नहीं थी तब। और इसीलिए आप देखें कि फारसी और संस्कृत में बहुत कुछ मिला जुला है, और उसकी यही है कि ईरान से भारत तक की जो ज़मीन थी उसमें कोई ऐसा बंटवारा नहीं था कि ये ईरान है, जो ईरान जब ये जो पंजाब की जो धरती था बटी हुई नहीं थी। और आर्यन लोग जब रूस से चलकर इस साइड को आए तो उन्होंने जब इनकी वो जो उस साइड पे बैठ के फारसी के नज़दीक चले गए, जो इस साइड पे आए वो संस्कृत के नज़दीक चले गए, और जो दो ग्रंथों की रचना हुई वो ऋग्वेद और दूसरी तरफ जो उनका जिंदाबिस्ता जो ग्रंथ है ईरान में, बाद में ऋग्वेद के आया, बट उन दोनों में बहुत कुछ आपको एक जैसे विचार मिलेंगे उसमें। और जो लैंग्वेज का जो सिस्टम है जिसको हम भारतीय यूरोपीय लैंग्वेजेस कहते हैं, उसका 1786 में जब जून्स ने आकर भाषाओं के बारे में बात करी, तब ये पता चला कि ये सारी भाषाएं यूरोप की और हिंदुस्तान की संस्कृत जो भाषाएं हैं, ये सारी एक जगह से, एक जहाँ से निकली हुई एक परिवार की भाषाएं हैं। तो जब हम पंजाब के संबंध से बात करेंगे भारतीय ज्ञान परंपरा की, तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऋग्वेदा। ऋग्वेद पंजाब की धरती पर लिखा गया, और जो ऋग्वेद है वो मैं समझता हूँ कि ये एक नॉलेज ऑफ साउंड है, कि जो उचारा गया, बोला गया, वो लिखा नहीं गया। और जो परंपराएं पता नहीं कितने साल पुराने, वो कितने 100 साल, हजारों साल पुराने वो श्लोक होंगे जो ऋग्वेद में आकर समा गए। और इसलिए मैं उस परंपरा को कहता हूँ कि फोनेटिक साइंस की एक परंपरा थी जो कि यहाँ पर ईजाद हुई, पंजाब की धरती पर ईजाद हुई वो। और उसमें सिर्फ एक धार्मिक या अध्यात्म के श्लोक ही नहीं है, उसमें मैथमेटिक्स है, उसमें मीटर है, उसमें कॉस्मोलॉजी है, उसमें साइकोलॉजी है, और उसमें एथिक्स है। जो ऋग्वेदा में आप देखेंगे उसमें सिर्फ अध्यात्मिक ज्ञान ही नहीं है, बहुत कुछ और भी समाया हुआ है जो पंजाब की धरोहर हम मान सकते हैं। और जब हम दूसरी तरफ देखते हैं तो पंजाब में और 3 बड़े ग्रंथ लिखे गए। पाणिनि की ग्रामर, जो इंडियन ग्रामर, दुनिया की ग्रामर का जो आधार बनती है, पाणिनि की ग्रामर जो है वो पंजाब की धरती पर लिखी गई है। और पाणिनि की ग्रामर से आपको समय से भी पता है कि जब जर्मन विद्वान जहाँ आए सोशियल, तो वो पाणिनि के अष्टाध्याय से बहुत सारे इंसाइट्स लेकर गए, और उन्होंने जाके दूसरी ग्रामर्स और भाषा विज्ञान पे, उन्होंने लिंग्विस्टिक्स पे काम किया। सो पाणिनि की ग्रामर के साथ साथ 2 ग्रंथ और बहुत बड़े हैं जिनसे आप पंजाब की जो बौद्धिक परंपरा है उसका अनुमान लगा सकते हैं। वो 2 बौद्धिक ग्रंथ जो हैं, उसमें एक तो गीता है जो कुरुक्षेत्र की धरती पर लिखी गई, वो भी उचारी गई है, वो भी फोनेटिक ज्ञान है।
गीता भी पहले लिखी नहीं गई, लिखने का काम बाद में हुआ। वो भी कृष्ण जी ने उचारी है, बोली है। सो वो भी फोनेटिक ज्ञान का बहुत बड़ा भंडार आप कह सकते हैं। और दूसरा वाल्मीकि रामायण की बात, वो भी कहा जाता है कि वाल्मीकि ने जो रामायण है वो जो पाकिस्तान में कसूर शहर है उसका कुछ आधार बनाते हैं कि कसूर में बैठकर जो कि लव कुश वहाँ थी उस टाइम, वहाँ पर लिखी गई रामायण को। सो ये जो पंजाब जो पुरातन जो वैदिक परंपरा है उसके साथ साथ पंजाब का बहुत बड़ा रोल रहा है। और सब सिंधु मोहनजोदड़ो और उसके साथ जो ज्ञान का जो सबसे पहला केंद्र बनता है, जिसको हम कहते हैं कि ज्ञान को इंस्टीट्यूशनलाइज किया गया, संस्थायिक रूप दिया गया, वो दुनिया में सबसे पहला केंद्र पंजाब में है, जिसको हम तक्षशिला के नाम से करते हैं। पहली बार हुआ कि इंटरडिसिप्लिनरी कोई ज्ञान जो शुरू हुआ वो तक्षशिला में शुरू हुआ, जिसमें कोई एक टेक्स्ट के बारे में बात नहीं हुई, बल्कि उसमें जो कहते हैं शास्त्रार्थ की बात हुई, डिबेट की बात यहाँ पर शुरू हुई, टीचर स्टूडेंट इंटीमेसी की बात वहाँ पहली बार तक्षशिला से शुरू हुई। और इंटरडिसिप्लिनरी जो ज्ञान है वहाँ पर शुरू हुआ। उसमें पढ़कर जो एशिया भर में लोग गए, जो वहाँ से निकले, वो ज्ञानवान जो लोग निकले वो एशिया में गए और पूरी दुनिया में फैले। और उन्होंने भारतीय ज्ञान को, उन्होंने स्थानिक जो भारत का ज्ञान था उसको ट्रांसकॉन्टिनेंटल ज्ञान में बदला। ये सारा तक्षशिला का आप कह सकते हैं कि तक्षशिला का योगदान है जो उससे हुआ। और उसके बाद जो परंपरा है हमारे पास बौद्धिज्म की परंपरा, जिसके सबसे बड़े जो बुद्ध के सेंटर तक्षशिला बुद्धिज्म का ही सेंटर था वैसे तो, उसके साथ जो पश्चिम पंजाब जो रह गया, जो पाकिस्तान में पंजाब है, वहाँ पर बुद्धिज्म के बहुत बड़े सेंटर हैं जो पुराने सेंटर हैं। और उससे एक निकली बुद्धिज्म से एक और परंपरा पंजाब में निकली, उसको हम नाथ योगी की परंपरा बोलते हैं। और नाथ योगी ने आगे एक नया ज्ञान दिया हमें, जिसमें उन्होंने कहा कि जो द बॉडी इटसेल्फ इज ए ग्रंथ। उन्होंने कहा कि ग्रंथ पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपका ब्रेथ, आपका जो सांस आप लेते हो, आपके पोस्चर्स, आपका हंगर, सेक्सुअलिटी, मोरालिटी, ये सब कुछ नॉलेज है, ये ज्ञान के केंद्र है। तो उन्होंने इस ज्ञान को हठ योग के साथ जोड़कर एक नया स्वरूप दिया भारतीय ज्ञान को, जो नाथ योगी पंजाब की गुरुनाथ, चंबरनाथ, बहुत सारे जलंधरनाथ, बहुत सारे योगी पंजाब के, जिनकी बहुत सारी वाणी हम पंजाब में भी पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं। और उसके बाद जो पंजाब में मूवमेंट आई वो भक्ति मूवमेंट है। और भक्ति मूवमेंट ने जो सबसे बड़ा आकर काम किया कि जो ज्ञान की भाषा संस्कृत थी उससे आगे निकलकर उन्होंने, भक्तों ने ये किया कि ये ज्ञान पर आम लोगों का भी उतना ही हक है, उतना राइट है, अधिकार है जितना ब्राह्मण लोगों का है। इसलिए उन्होंने कहा कि जो ज्ञान की रचना या वाणी की रचना जितनी भी है वो सारी स्थानिक भाषाओं में होनी चाहिए। और आप देखिए कि कितने सारे भगत नॉर्थ इंडिया में पैदा हुए, उन सभी का पंजाब, रविदास ले लीजिए, कबीर ले लीजिए, रामदेव ले लीजिए, जो कम से कम पंजाब में ज़्यादा भक्ति की मूवमेंट है वो निगुण परंपरा की भक्ति है जो सारी। उसने जो दिया, उसने लोगों के साथ जुड़ने का काम किया। उस भक्ति मूवमेंट से बाद में सिखिज्म निकलता है। सिखिज्म में गुरु नानक से लेकर गुरु गोविंद सिंह तक और आगे तक जो परंपरा है, और उसमें जो सिखिज्म का जो पंजाब में आप कंट्रीब्यूशन आप देखें तो सिर्फ पंजाब की कंट्रीब्यूशन नहीं है। तो गुरु नानक ने आकर जो जितना सारी उम्र मालूम 27 साल गुरु नानक दुनिया का भ्रमण करते रहे, उदासियाँ करते रहे, और 27 साल के बाद जो भी करतारपुर कॉरिडोर खुला है उस जगह पर आके उन्होंने जितना कुछ उन्होंने अपना उसका विचारधारा में लाई थी उसको सारा प्रैक्टाइज किया आकर, और खुद आकर खेती करी और संगत और भगत लंगर की प्रथा बंद शुरू हो गई। और जो 3 डॉक्ट्राइन दिए सिखिज्म को वो था जो है कीर्त करो, नाम जपो और वंड छपो। और सिखिज्म का जो ये डॉक्ट्राइन है जो आज तक सिखिज्म के साथ है, आप अभी भी देखिए कि उसी परंपरा से
कहीं भी कोई विपदा दुनिया भर में पड़ जाती है और सिख लोग लंगर लेकर चले जाते हैं, हम दवाइयाँ लेकर चले जाते हैं। तो ये डॉक्ट्राइन हमें सिखिज्म से आया। सबसे बड़ा जो डॉक्ट्राइन सिखिज्म ने दिया वो था सभ्य सांझी वार सदायन कोई न दिससे बारह जियो, जिसमें जाति प्रथा थी, जो वर्ण प्रथा है जो हिंदुस्तान की, उसको उन्होंने पूरी तरह पंजाब में ख़त्म करने की कोशिश की। और कुछ देर के लिए पंजाब में गुरुओं के टाइम पर ख़त्म की रही और बाद में दोबारा प्रणव की अलग बात है जो हमारे खून में समा गई है। और इसलिए जो सिखिज्म का पंजाब में जो ज्ञान परंपरा है वो बहुत बड़ी परंपरा है। और आज की भी जो जितनी समस्याएं, इकोलॉजी की समस्या, एनवायरनमेंट की समस्या या जो भी समस्याएं, वो सभी का, दाम बराबरी की समस्या, जात पात की जो समस्या, उस सभी का समाधान आपको सिखिज्म की फिलॉसफी में, सिखिज्म के ज्ञान में आपको मिल जाएगा। और इसके पैरेलल एक और परंपरा पंजाब में जो सूफीज्म की परंपरा है। बाबा फरीद ईरान की तरफ से आए, अफगानिस्तान की तरफ से आए और उन्होंने आके हांसी और हिसार में जो पंजाब का एक टाइम पर हिस्सा थे, वहाँ पर आके उन्होंने जो श्लोक रचे, जो उन्होंने वाणी की रचना की। और सूफियों का ये एक ख़ास किस्म की कॉन्ट्रीब्यूशन है इंडियन ट्रेडिशन को, कि जो सूफी पोइट्स जितने भी पंजाबी में आए हैं, वो शेख बाबा फरीद ले लीजिए, शाह हुसैन ले लीजिए, बुल्ले शाह, सुल्तान बाहू, बहुत सारे पोइट्स हैं जिन्होंने आकर इस्लाम के कट्टरपुने को तोड़ा और एक नया किस्म का डॉक्ट्राइन दिया, जिसको उन्होंने हिंदू ट्रेडिशन के साथ जोड़कर एक नया डॉक्ट्राइन दिया था। और सूफीज़म अभी भी पंजाब में जब जितना भी है, जो इंडिया में जो सूफीज़म है, वो अभी भी सांझीवालता की बात करेगा। इसलिए सूफीज़म की ट्रेडिशन जो पंजाब की है, उसका भी गुरुओं की ट्रेडिशन की तरह बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इस पंजाब में, और इंडियन ट्रेडिशन के लिए बहुत बड़ा उसका कंट्रीब्यूशन हो सकता है। तो मैं देखता हूँ कि जो कॉलोनियल टाइम भी है जिसपे ब्रिटिश राज रहा है, उस पर भी इसी ट्रेडिशन की वजह से ही हमारे फोकलोर में जो आया, हमारी जो राइटिंग्स में आया, हमारी ज्ञान परंपरा में जो आया, उसी की वजह से जो 2.5% लोग हैं पंजाब के, वो इंडियन फ्रीडम मूवमेंट में 95% उनकी शहादतें होती हैं। अगर 3 लाख लोग उस टाइम उम्र कैद हुई है तो उसमें से 2400 के करीब लोग पंजाब से हैं। और जो अगर जो है शहीदियाँ होती हैं, जो फांसी लगे लोग, 114 लोगों को फांसी दी गई, उसमें से 92 पंजाब को बिलोंग करते हैं। ये पंजाब की नॉलेज ट्रेडिशन का ही एक प्रतिकर्म है, जहाँ का ये उसकी एक योगदान है कि पंजाब के लोग ऐसे इस किस्म के हो गए। और पंजाब के लोग बेशक देखिए कि आप कितनी बड़ी, हम कहते हैं कि पंजाब हमेशा इन्वाइटर्स के सामने रहा है, हमेशा जंगों का सामना किया है, पर हमारे पास हमारी नॉलेज की ट्रेडिशन भी और बौद्धिकता की ट्रेडिशन भी, कहाँ से लेकर मोहनजोदड़ो से लेकर आप ऋग्वेद तक आ जाइए, आप गीता, वाल्मीकि की रामायण, पाणिनि की रामायण, पाणिनि की ग्रामर, कहाँ तक हम देखें कि वो जितने ट्रेडिशन हमारी वेल्लोर की है, उतनी ट्रेडिशन हमारे पास ज्ञान की भी है। सो इतने शब्दों के साथ मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। आपने बहुत ध्यान से सुना, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया सर। आपने ना सिर्फ हमें पंजाब की ज़मीन पर लिखे ग्रंथों से परिचित करवाया, बल्कि पंजाब में चल रहे भारतीय ज्ञान परंपरा के स्कूलों के बारे में भी चर्चा छेड़ दी है। बेशक जाने माने संस्कृत विद्वान हरे कृष्ण सतपथी जी इस बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। प्रोफेसर हरे कृष्ण सतपथी एक जाने माने संस्कृत विद्वान और कवि हैं। उनकी 50 से ज़्यादा किताबें पब्लिश हुई हैं। राष्ट्रीय संस्कृत यूनिवर्सिटी तिरुपति से वाइस चांसलर के पद से रिटायर हुए सतपथी ने कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज यूनिवर्सिटी के पहले वाइस चांसलर और SJSV के वाइस चांसलर के तौर पर भी काम किया है। उन्हें साहित्य अकेडमी अवार्ड, भारत के माननीय राष्ट्रपति द्वारा ब्रह्म ऋषि की उपाधि, संस्कृत अकेडमी पुरस्कार सहित कई पुरस्कार और सम्मान मिल चुके हैं। अभी वह IIT भुवनेश्वर में पढ़ा रही हैं और साहित्य अकेडमी के संस्कृत एडवाइजरी बोर्ड के कन्वीनर हैं। मैं उनको मंच पर आमंत्रित करती हूँ कि वो अपनी बात रखें।
सभी को नमस्कार. Good afternoon to one and all present here. Friends, at the outset, I express my profound sense of gratitude to Sahitya Akademi for organizing such a program to enlighten us regarding the significance of Indian intellectual system or Indian knowledge tradition. Friends, you know, this subject has assumed a great importance, particularly in the contemporary society, after the formulation and the implementation of NEP 2020, National Education Policy 2020, that enshrines that the students of the modern society, of the universities, colleges, should have some basic ideas regarding our glorious past, particularly in the field of knowledge creation and knowledge transmission. Friends, that is the reason why the authorities of the universities and colleges have started to restructure and redesign their curriculum, keeping the provisions of the National Education Policy 2020 and providing a space to the students to have some basic knowledge regarding our knowledge system. And it should not be misconstrued that the purpose of giving an idea to the modern students regarding Indian knowledge system doesn't mean that their attention is required to be diverted from their present system of learning, art, science, commerce, engineering or medical science, but to give them an idea regarding the real purpose of education. That education is not rote learning. Education is not meant for getting a license from the university, just to, in a form of a passport which can be produced before a company for getting a job. Education is something different. Education is the manifestation of the divine qualities already in a human being. Education, as we were discussing regarding Swami Vivekananda, we want that education by which the character is built. We want that education by which the courage of a lion is generated in the minds and hearts of the young people, those who are studying in the colleges and the universities. Education is that which can enable us to stand on our own legs in an Atmanirbhar Bharat. That is the purpose. And education is also meant for giving us an opportunity to serve and to earn something for our livelihood. Friends, this is the idea behind the new education, the National Education Policy, and incorporation of some portions in the curriculum related to Indian knowledge system. भारतीय बौद्धिक परंपरा के बारे में हम जब चर्चा कर रहे हैं तब 3-4 बिंदु हमारे सामने आ रहे हैं. सबसे पहला है भारत की बौद्धिक परंपरा. हम अभी यहाँ we are confined to discuss regarding the existence of a knowledge system in our country in the past. So ये जो भारतवर्ष है, इसके बारे में चर्चा करने से पहले हमको ये मालूम होना चाहिए ये भारतवर्ष क्या है, ये भारतवर्ष की क्या विशेषता है, और उसके बाद हम चर्चा करेंगे कि इसकी जो शिक्षा पद्धति थी और आज जो है इसमें कुछ अंतर है, या आज जो शिक्षा पद्धति यूनिवर्सिटी में प्रचलित हो रही है इसमें कुछ सुधार लाना चाहिए. और इन दिस कंटेक्स्ट
whether there is any relevance of NEP 2020. Friends, Bharat, yet it is not mere a geographical territory on the surface of the earth. ये भूगोल का एक टुकड़ा नहीं है, ये एक भौगोलिक स्थान विशेष नहीं है। भारत का जो अर्थ है यह बहुत महत्वपूर्ण हमारे लिए है। भारत का एक अर्थ है, भारत is a word which is connotative by nature, which is not denotative. It connotes many things. It connotes its history. It connotes its knowledge system. It connotes its social picture. It connotes its glorious past. Bhayam Ratam Bharatam. That is the etymological meaning of our sacred motherland Bharata. Bha means a robust and vibrant knowledge system. Bha means the Teja. Bha means Oja. Bha means Veja. Bha means Rashtra Bhakti. Bha means Brahmacharya. And our country, we should be proud of our country that at one point of time, this Bharat Varsha was engaged in all those divine qualities, including the knowledge creation and knowledge transmission. Bha means knowledge. Prajnanena pavitritam cha vidusam avharatam santatam. This sacred land was purified by the knowledge created by our ancestors, propagated and promoted and transmitted by our gurus. And in that sense, Bharata is having some significance in the entire world. And at one point of time, when knowledge was not created in the rest of the world, when knowledge was there was no process of methodology of transmitting knowledge from guru to shishya, at that time people were attracted to India just to learn. And we had some universities like Nalanda, Takshashila, Vikramshila, where the students from abroad came and sat before the lotus feet of the gurus and they started learning. That is the reason why at one point of time, now the historians are unable to find out that time. That कालखंड निर्धारण इतना सहज नहीं है। जब भारतवर्ष की ज्ञान परंपरा अत्यंत समृद्ध थी, and at that time our country was worshipped and regarded in the entire world as the Vishwa Guru. It has been mentioned by Manu in his Manusmriti. Etat desa prasutasya sakatha nagradanmana swam swam charitram sikkheran prativyam sarvamanava. We are grateful to Professor Ravi Singh, who has enlightened us regarding the glorious knowledge tradition of Punjab, and he has referred to the significance of our country, how India was famous, Punjab was an integral part of it in spreading knowledge and promoting knowledge. Etat desa prasutasya sakatha nagradanmana swam swam charitram sikkheran prativyam sarvamanava. The people belonging to all walks of life, they used to come to this land, sacred land of Bharat, and they learned what should be the lifestyle of a person. How can we ensure the harmonious growth of body, mind and soul? Friends, that is Bharat. And Bharat was Bharat not because of its geographical territory. Himalaya on the north, this is on the south, that is on the way to it. That is correct. But we can think of a Bruhattar Bharatvarsha. Now, Professor Ravi Singh was mentioning regarding the position of Aryans. They were Jadavaras, no doubt, and they came from outside. But I would request all of you to kindly go through a book written by Will Duran,
that Aryan invasion that never happened. If you think of a greater Bharatavarsha, a Bruhattara Bharatavarsha, Aryans were born in this sacred soil and they were the integral part of this land. It was Bharatavarsha, a greater Bharatavarsha, and all these countries from which Aryans came, all our historians have told that they were all parts of India, part of Bharatavarsha. He has mentioned regarding Pani. Pani was born in Lahore, and Lahore is now a part of Pakistan. It was a part of, integral part of Bharatavarsha. It is a Bruhattara Bharata. So friends, this is Bharata and the knowledge system. Regarding the origin of knowledge system, he has mentioned that the Harappan is Mohenjo-daro. Friends, Vedas, he has also made a mention of the Vedas. If you analyze the origin and development of Western knowledge system, intellectual tradition, then we are reminded of certain great scientists, great educationists, great philosophers, those who are responsible for creation of knowledge system in their country and transmission of knowledge to their disciples. They are Aristotle, a great philosopher, and he was born just 2,200 years ago. And so far as physics is concerned, we are told that the father of physics was none other than either Newton or Einstein. Where we are taught chemistry in the classroom, yes, we are told rather an idea is being imposed upon us by his disclosing the fact that no, this chemistry, the father of chemistry was Antony Lorentz, none other than that. And when we are teaching medical science to our medical students, we are telling, do you know who is the father of medical science of the world or of the country? So when the students become curious, then the poor teacher says, no, he is none other than they are hypocrites. It is said. But friends, at the same time, we are forgetting our own gurus. We are forgetting Charaka. We are forgetting Susruta. We are forgetting Dharmantari. We are forgetting those who were born some 5,000, 6,000 years ago. And Vedas. Veda means that is the storehouse of knowledge. Veda is the word which has been derived from the root word. It means jnana. So first, the jnana, this Vedas, and Vedas, you see, while analyzing this foreign wisdom system or knowledge system, we are reminded of Aristotle and Isaac Newton, Galileo, etc., etc. But here in India, when we are talking of knowledge system, who were our first gurus? Three first gurus, we are proud of them. Those who are being, till now they are being remembered by our students, by our gurus, by our society, while we start our teaching learning process. Who was the author of Vedas? Now, Professor Ravirji was just telling something regarding the authorship of the Vedas. Vedas, we cannot say that these were written or composed by some human beings. Vedas are written as Apauruseya. And these are all emanated from Lord Brahma, just a little bit of Vedas. And it was in oral tradition for a long time. And then Bhagavan Vyasa, he codified Veda Vyasa, some Vedas, some 4 Vedas, some 5,000 years ago. And the second Guru, about whom Dr. Ravi Singh has made a mention, we are very fortunate that Srimad Bhagavad Gita was emanated from the lips of
Bhagavan Sri Krishna in the sacred land of Punjab or Haryana. It was one at one point of time. So Jaswayam Padmanavasya Mukha Padma Vinisruta. Second Guru. First Guru is in the strict sense of term, although he did not author it, but he revealed it, but it was just emanated from the sacred lips of Lord Brahma, and it was in existence for thousands, lakhs and lakhs of years. So while discussing the origin of Indian knowledge system, we must not forget that these were all divine creations. We also must not forget the Alvaras who composed or who revealed this Tamil Prabandha. These were also simultaneous. Tamil Prabandhas were also given to us and to enrich our knowledge system. Vishnu, while we discuss regarding the Guru Parampara, the first Guru comes Brahma, the second Guru comes Narayana, and the other Guru comes Maheshwara, from whom the entire linguistic system was originated. Mahadeva, who is regarded or worshipped as the Jnanam Icchetu Santara, he was an incarnation of knowledge and wisdom. And if you want to enrich or enhance your knowledge level, yes, it has been advised that let us invoke to Lord Mahadeva. Mahadeva, it is all the entire linguistics, the Vyakarana, the grammar, everything has been emanated from. And Vyasa, who codified Veda, who codified Brahma Sutra, who codified all the Puranas, which were just emanated from these three Adi Gurus of our country, was none other than a combination of Brahma, Vishnu and Maheshwara. A Chaturvadano Brahma. While paying our regards to Bhagavan Vyasa, we used to say, A Chaturvadano Brahma, Vibhavura Paro Hari, Abhala Lochana Sambhu, Bhagavan Vadarayana. Vyasa was not a small thing. He was not an imaginary person. Historians, they say many things regarding Vyasa. But Vyasa, Ashtadasa Purana Nam Karta Satyavati Sutaha. And now even, while adoring our Guru, we remember these three Adi Gurus. Brahma, Vishnu, Maheshwara, Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Deva Maheshwara, Guru Sakshat Param Brahma, Tasmai Sri Gurave Namaha. Friends, now you imagine the time when this knowledge system was created. It is crores and crores of years. Just after the creation was created by Lord Brahma, he wanted to give certain guidelines to the mankind just to maintain a healthy lifestyle and to earn something for their livelihood. And that is the reason this was done just after the creation. That is the reason why Vedas are regarded as the first ever constitution of mankind in the world. Our own constitution came into force on 26th January 1950. But our own glorious constitution, Indian constitution, in the strict sense of term, भारतीय संविधान का आविर्भाव हुआ था जब ब्रह्मा ने क्रिएशन सृष्टि की सर्जना की. तो ये है, this is what Chaturpadana, and this is the origin. This is the tradition and the beginning of the tradition. And then this vidya, but it is knowledge. Jnana क्या है, विद्या क्या है? ज्ञानेन अनेन इति ज्ञानम. And what was the content of the knowledge? For what we were so interested to know? Yes, no doubt. This knowledge system was also meant for giving us some strength to earn something for our livelihood, to give us certain, to enrich us
with certain skills, with certain power. But at the same time, the other aspect of Vidya was something different. Ja Vidya sa vimuktaye, dve vidye veditavye. We were advised by our forefathers, your savants and seers, that a student should read two types of Vidya. One Vidya for nijuktaye, for placement, and another Vidya for manifestation of his internal divine qualities. Yes, I have completed. Divine qualities. And that is what, say, the student, the Tejasvi Navadita Vastu. Nowadays, friends, you see, even if after getting the highest qualification from the university, the students are getting frustrated. They are getting desperate. And you know that this despondency or frustration is not only confined to the particular student, it spreads like a contagious disease. One Swami Shivananda said, frustration, desperate and despondency is a criminal offense that requires a capital punishment. We must have self-confidence in yours, and in order to inculcate that self-confidence, that Atma Jnana and Atma Bodha, this Indian knowledge system was intended. And that is the reason when that gave us a scope to know who am I. I am not a combination of hands, legs, or indriyas and panchabhutas. I am Mano Buddha Hantara Chitta Vinaham Nacha Spratra Dikhe Nacha Prana Lekhe Nacha Vyoma Vyumere Natejo Navali Chidananda Rupa Sivo Sivo Aham Nirvikalpaha Nirakara Rupa Vibhur Vyapya Sarvatra Sarvedhyana Shadami Samatvam Namuktir Navanda Chidananda Rupa Sivo Sivo Vedayati Vidya Margam Darsayati Upachuktam Margam Tat Padam Darsitam Jena. It is not the duty of a professor. We did not have professors, lecturers, readers, or assistant professors. We had gurus, those who were always engaged in dispelling the darkness of ignorance and inculcating the light of enlightenment and knowledge within the student. So friends, this classification, there are so many branches. Now you see the largest university in India or in the world may have more than 200 or maximum 250 departments. But if you analyze our system, which is included in Angani Vedas Chatvaraha, 4 Vedas, Shikha, Kalpa, Vyakarana, Chanda, Nirukta, Jyotisha, 6 Vedantas, Arthashastra, Dharmasastra, Ayurveda, Dhanurveda, Gandharva Veda, Purana, etc. All the subjects taught now under various departments in the entire world can have their roots and moorings in all the 18 or 22 Vidyas. So this is what, so friends, and the methodology which was adopted for transmission of the knowledge was something unique, wonderful. That is the methodology which was adopted by Lord Sri Krishna in the battlefield to transmit his real knowledge to Satyasasi Arjuna. Sraddhavan lavate jnanam tarpara sanjate indriyaha. Yes, this was the methodology, this was the paddhati through which the knowledge was being transmitted. So friends, while discussing regarding Indian knowledge system, we must be aware of its contents, the purpose, the origin of the tradition, and how the origin is divine. The origin is divine because the knowledge system wants to make everybody under the sun divine. And the cardinal principle of Indian philosophy is to divinize the humanity and humanize the divinity. Yes, we see God as human beings, and our philosophy inspires us to make our children Amtasya Putraha. They are all divine entities. So friends, I think there is a necessity
of discussion on this knowledge system, because that can give us some moral and mental strength based upon which we can not only earn a good livelihood, a good placement, but at the same time we can lead a good and comfortable life. We can enjoy our life and we can understand that life is precious and we do not want to die. मरिते चाहिना आमी सुंदर भुवने मानवेर माझे आमी बांची भाव रचाई यही सूर्य करे यही पुष्पित कानने जीवंत हृदय माझे जति स्थान पाई। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारतीय बौद्धिक परंपरा के सभी शुरुआती टेक्स्ट संस्कृत में लिखे गए थे और बाद में टेक्स्ट की मातृभाषा में संस्कृत में। इसलिए प्रोफेसर सरस्वती जी का ये लेक्चर बहुत महत्वपूर्ण था। बहुत बहुत शुक्रिया सर। और अब मैं मशहूर कन्नड़ लेखक श्री बसवराज कलगुणी जी का परिचय करवा रही हूँ। प्रोफेसर बसवराज कलगुणी एक मशहूर कन्नड़ लेखक और प्रोफेसर है। वह बंगलौर यूनिवर्सिटी में सेंटर फॉर कन्नड़ स्टडीज, गांधीयान स्टडी सेंटर और अम्बेडकर सेंटर के डायरेक्टर रहे हैं। उनके 5 प्रकाशन हैं। कुछ पत्रिकाओं का संपादन करने के अलावा उन्होंने 8 किताबों का संपादन भी किया है। वह कर्नाटक साहित्य अकादमी बुक्स पुरस्कार, डॉक्टर M.N. कुलवर्गी पुरस्कार और संस्कृत मंत्रालय से टैगोर स्कॉलरशिप के प्राप्त करता है। वर्तमान में मैं साहित्य अकादमी के कन्नड़ एडवाइजरी बोर्ड के कन्वीनर हैं। सर आइए अपनी बात रखिए। Respected Sahitya ji, और Ravi Singh ji, you have heard Sahitya talking about the classical intellectual tradition of India. And Ravi Singh ji was talking about the provincial culture, its emancipation of the wisdom of the provincial culture. Here, I want to tell you that there was a wisdom, there was an intellectual tradition which was not at all written. It came from thousands of years together, which was peripheral. Even today, some of the wisdom that has been not written but has come from the tradition is not considered as a wisdom at all. For example, thousands of years of food making of the housewives of different areas of India, different varieties of food making, and the wisdom which was put behind those cultures is not at all considered as a wisdom here, as an intellectual. It does not come under intellectual domain at all. Today, I want to speak about some of the peripheral knowledge systems which are not considered as knowledge at all, but it was the knowledge of material culture which propagated the link between the earth and the life and the man. Because of the time restriction, I want to read some of the important points that I want to speak today. Indian intellectual tradition can be depicted in two
different domains. Indian society is a complex system of various communities in which the large chunk of masses use orality for the depiction of their intelligence or creativity. The other minor group have been into the written culture for many centuries. Indian intellectual traditions are various and their number is countless. For the sake of understanding these various knowledge systems, I have classified them into 4 groups. One, the traditional wisdom of tribal communities, which was not at all written. The other one is traditional wisdom of the agrarian culture, which involved different types of productive activity. The third one is the emergence of native languages, which our rival Singh spoke about. Emergence of native languages and new perspective of interpreting the classic epics and creating a new thought process in a new Desi epic poems. The last one is bhakti and spiritual movements and aspirations of egalitarian society. The first two, the wisdom emerged mainly within the workspace in which they were involved, these communities were involved. Most of the intellectual traditions have been part of the tradition of the different communities in their rituals and day-to-day involvement with their life in their space in which they lived. It can be called as the wisdom of material culture. Even now, the different tribal communities, the gathering of the honey from the beehives of the forest and the technique of hunting are exclusively their traditional wisdom. Ancient kings of Karnataka did use their wisdom for guerrilla warfare with the rival kings. Traditionally, the tribal communities were against the agrarian culture. One of the tribal epics, Malaya Mahadeshwara, Malaya means forest, the king of the god of the forest. One of the major epic poetry of Kannada, Malaya Mahadeshwara, adores Shiva as their forest god. These tribal communities adore the forest god as their savior. He is primordial god for them. They have traditionally opposed agrarian culture which demolished the forest to make use of the land for their agricultural purposes. This epic poetry metaphorically urges Shiva to protect nature against the hazards of the invasion of the human element. Even today, most of the tribal communities of South India, in and around Karnataka and Tamil Nadu and Kerala, are in the forefront of the same nature movement that we have to remember. How this non-verbal culture, wisdom, has created a new culture of survival of the man, which definitely says to save the nature. This is the main theme of the tribal communities, which really fight for their life and also the life of the people in general by protecting the nature, forests, etc. Second one is agrarian culture of South India, especially in Kannada-speaking belt, has contributed to the emergence of new native productivity. The production and development of millet culture, especially ragi and jowar, is well known now. The Bijapur variety of jowar and the foxtail millet of southern states is to be mentioned here. Foxtail millet is primarily produced in India's southern states with significant cultivation in Andhra, Karnataka and Tamil Nadu, and also grown in Telangana. It is a drought resistant and it has been the savior of the poorest of the poor in a drought season. The millet culture has been the product of our farmers' wisdom. Last but not the least,
The Padigi variety of chili is worldwide known for its taste actually, and it has got the GT tag also. It has got what is the GT tag? The global tag. This Padigi chili, which has been grown in the fields of the farmers of the Karnataka, has got the GT tag actually. Due to the abundant productivity, ancient kings from Kadamba to Chola up to 17th century Vijayanagara Empire, three classes of society had an important saying in the ruling class. They were religious communities like Jaina, Shaiva and Vaishnava. And the second one was the trading communities. And the third was the blacksmith and sculptor communities. During this period, the patriarchy emerged as stronghold. The caste hierarchy became very strong. This agrarian culture developed this also, the hierarchy of a caste system and a patriarchal system where the female was completely subdued. But some of the positive developments during this time were the developments of metallurgy culture and architecture, purifying gold and casting iron to prepare the fine war weapons like swords, knife was the main industry of this period. You can see now in many places the relics of ash meant to melt the iron. There is one old manuscript called Khadga Shastra, Sword Shastra of 15th century in Kannada, which describes the preparation of the various swords. And Ravil Singh Ji was talking about Harappa and Mohenjo-daro culture, and you are well known that Harappa and Mohenjo-daro culture, you don't find iron at all. You find silver and gold. The gold which you find there in Harappan culture, it has been found, it has been discovered, it has been researched that this gold has travelled from south to that culture. And you know, the Karnataka at that time produced the best and then purified gold at that time ancient culture. You know, the Kolar gold fields, even now, it was an ancient gold mine which produced one of the finest gold of that period. Many folk performing arts like Lavani, Yakshagana flourished during this period. As the wealth accumulated with a few and the exploitation of the poor and the working class started to grow, you know that poetry always is the language of the wisdom and caters to the humanity in people among such stratified society. The folk epics of Kannada and Tulu, Manteswami and Siri Partana, both are strongly stood against these dominating powers. Manteswami Kavya, a celebrated epic from Karnataka, primarily associated with the Dalit and nomadic traditions of the 16th century, definitely tells the powerful critique of social hierarchies and the caste system. It highlights the fight against the oppression and advocates for a society based on equality. The second epic, a Tulu language epic, Siri Partana, it actually revolves around the woman's identity and agency, resistance against patriarchal constraints, and the complexities of matrilineal society. The epic is essentially a tragedy that follows the lives of 4 generations of women and their struggles within their domestic and social spheres. The third one that I am going to speak before you is the emergence of native languages in the ancient Indian period gave an impetus to explore new identity of culture and literature. The regional poetry of ancient Kannada started with a vision
of Shramana philosophy of Jaina, wherein this philosophy, Jaina philosophy, gave importance to the individual man and his heroic deeds. And his deeds where fruitfully he lives, enjoys the life. One of the important poetry, first poetry of Kannada, Mahabharata from Pampa, adores the heroes. Actually, it differs from the Vyasa Mahabharata, wherein it gives an importance to the heroic people who really live for some of the values of the life. And the primary vision of the South Indian Desi poetic tradition lies in glorifying the highest values of this world, including Shaurya, Prema, and Rajadharma. And the fourth one that I am going to tell before you is the Bhakti element in the Desi poetry. Within 3 minutes, I will finish off this one. The Bhakti movements of South India had an influence of 3 Vedantic schools, but differentiated in many ways from them. You know that 3 Vedantic schools of this ancient period was Advaita of Shankaracharya, Dvaita of Madhvacharya, and Vishishtadvaita of Ramanuja. You know that all these 3 people, the Vedantic scholars, come from South India. Actually, all were from South India. All 3 took different approaches to the ultimate relationship between Jiva and Supreme. Shankara advocated Jnana Marga, but these 2 advocated the Bhakti Marga, actually. But by this time, the Bhakti movement had already rooted in Tamil Nadu, spreading backward caste communities, and Vedic rituals were rejected to gain the proximity to the God. Devotional songs were main media which infused direct contact with the God by the devotional songs which emotionally evoked a kind of relationship between God and the Bhakta. You know that classical music actually coordinated with the Desi tune and some of the abhangs of Marathi and some of the Vittal songs of Marathi also, and then Tevaram songs of Tamil and Kirtanas of Karnataka, with the fusion of classical and the native songs as such here. And the effect of such emancipation made the fusion of classical music and Desi Laya. And the last one is the Vachana movement of Karnataka, wherein this movement actually made an impetus on most of the Kayaka Jivi, Shudra class people, working class people, wherein the God here is the highest form of ethos and value which should be imbibed in mind and body according to the Vachana movement ethics and philosophy. The harmony between the utterance and action is notified here. And then lifting Kayaka, the work concept, to the spiritual level. And the last one is the rejection of Vedic Maya concept and making this life as a real one. And the last one is equality among everybody and rejection of caste hierarchy. Even now, the Saravachanakaras, Tattvapadakaras who are in Karnataka actually do spread this type of social equality through their songs all over the northern part of Karnataka. They are called bards of northern Karnataka. Actually, they come from every society, every caste actually, including the Muslim community, wherein one bard who says tells, Allah is not there, Allah is in your heart. You are the Allah, ultimately you are the Allah. Actually, this urge, this utterance of a Sufi is definitely because of the influence of the Bhakti tradition of Karnataka as such. So this is some of the points that I want to put before you regarding the wisdom
and the intellectual tradition of southern India, especially the Karnataka. Thank you very much. आपके विचारों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज हम भारत की परंपरा से रूबरू हुए। डॉक्टर वेद सिंह जी, प्रोफेसर सतपति जी और बसवराज कलगुड़ी जी इस कार्यक्रम में शामिल होकर साहित्य अकेडमी का गौरव बढ़ाने के लिए हृदय दिल से धन्यवाद देती हूँ। कल शाम 4 बजे हम फिर से आमने सामने कार्यक्रम में कुलदीप सिंह जी और विश्वास पाटिल जी को सुनेंगे। तो कल फिर आप सबका इंतजार रहेगा। आज के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। विनम्र निवेदन है कि अपने स्थान पे बैठ जाए और अगले प्रोग्राम का आनंद लें। धन्यवाद।